नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया नॉलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण जदि आम चैनल को प्रथम आसती दयाकोरी चैनल सब्सक्राइब बटन क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटी भल लगे निश्चय वीडियोटी को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलें जहाँद्वारा आप प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइपर। देखो जो अस्थायी कर्मचारी अच्छा से स्थायी हाईकोर्ट को जो गुरुत्वपूर्ण निर्देश रही चाकरी और नियमित जो आउटसोर्सिंग बा जो मैंने डेली वेज वर्कर अच्छा से गोटे खुशी खबर कहवा। दयाकोरी भिडियोटी को शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा आप संपूर्ण खबर विषय में जानीपर। तो देखो डेली वेज एम्प्लॉई जो अच्छा डेली वेज जो एम्प्लॉई अच्छा आउटसोर्सिंग बा अस्थायी कर्मचारी जो मैंने कंटिन्यूअसली सर्विंग फॉर ओवर 10 ईयर से माने 10 वर्ष जाए कंटिन्यूअसली सर्विस करथिबे इन सांक्शन पोस्ट इज एंटाइटल टू रेगुलराइजेशन से रेगुलर करा जाय परिबो। प्रोसीड्यूरल जो इरेगुलारिटी कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर डैनियल ये कहुई कर्नाटक हाईकोर्ट को तरफ गुरुत्वपूर्ण निर्देश दिखाई। ए डिवीजन बेंच ऑफ कर्नाटक हाईकोर्ट कंप्राइजिंग जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित, जस्टिस रामचंद्र डी हदार हेल्ड ए डेली वेज एम्प्लॉय जो मैंने अच्छा कंटिन्यूअसली सर्विंग ओवर 10 ईयर जदि से कार्य करेंगे पोस्ट इन एंटाइटल्ड टू रेगुलराइजेशन एंड प्रोसीड्यूरल इरेगुलारिटी डिले कैन नॉट बी सोले ग्राउंड फॉर डैनियल ये कहुई। The petitioner was engaged as a daily wage employee in forest department over a period of 30 years, was discharging his duty as a forest watcher or driver, performing tasks equivalent to those assigned to the regular employee. तो रेगुलर एम्प्लॉई परी जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे कार्य करथिले से रेगुलर एम्प्लॉई परी कार्य करथिले डिस्पाइट रेंडरिंग कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड सर्विस फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। The petitioner request for regularization was denied through the endorsement dated जो 29/8/2016 अनुसार prompting him to seek redressal before Karnataka State Administrative Tribunal से गोटे केस करथिले। However the case 80 void order date जोटा 31/7/2019 रे dismiss his claim for regularization on the ground of lack of documentary evidence establishing continuous service and non-fulfillment of condition prescribed in the उमा देवी जजमेंट जोटा कि उमा देवी जजमेंट क्षेत्र में जोटा होता फर्दर केस एटी हेल्ड दैट देयर वाज ए डिले इन सेकिंग रेगुलराइजेशन एग्रीड बाय द सेम द पिटिशनर फाइल से गोटे पिटिशन फाइल करथिले रिट पिटिशन चैलेंज द लीगैलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ द ऑर्डर जोटा कि 31/7/2019 रे पास बाय द केस एटी। Further, the petitioner prayed for quashing the order of case 80 and sought a direction to the respondent to grant regularization of this service along with all consequential monetary benefit जो अच्छी तांको दवा पाई से रिक्वेस्ट करथिले पिटिशन रे। It was contended by the petitioner that he has satisfied the criteria for regularization as per the various government order circular issued both prior to and subsequent to the Uma Devi decision of the Supreme Court रे जोटा हेतिला। It was submitted that the case 80 had erroneously applied the ratio in the judgment of Uma Devi without appreciating the subsequent decision of the state of Karnataka other versus M.L. Kesari and other, Nihal Singh and other versus state of Punjab others, state of Karnataka and others versus M.A. Bardar another with the permit the regularization of the employee who have completed 10 years of service in sanction post। जे सांक्शन पोस्ट रे 10 वर्ष अधिक चाकरी करथिबो रेगुलर करा जाय पारे बोली जो पूर्व जो विभिन्न हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देथिले। इट वाज फर्दर सबमिटेड दैट द पिटिशनर केस वाज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द जनरल कैटेगरी ऑफ डेली वेज वर्कर एंड हिज ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होइची वेयर सिमिलर टू दोज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉई। जेतले परमानेंट एम्प्लॉई माने जो परिवार कार्य करछन्ती सेही कार्य से माने आउटसोर्सिंग बा डेली वेज वर्कर जो कार्य करूची। On the other hand, it was contended by the respondent that the petitioner engaged was not an against a sanction post. It was submitted that as per Uma Devi decision, daily wage employees do not have an inherited right to claim the regularization. In was further submitted that the petitioner had no produced formal appointment order and other conclusive proof of demonstrating continuous service in a sanction post. It was further submitted that the continuation of petitioner of employment was a result of interim relief granted by the court, not due to an official recognition of his service tenure.
इट वाज ऑल्सो एम्फासाइज दैट द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो रही रिक्वायर अपॉइंटमेंट टू मेड थ्रू द प्रेस्क्राइब सिलेक्शन प्रोसेस व्हिच वाज नॉट डन इन द पिटिशनर केस। तो से अनुसार जब देखा कोर्ट ये कौन गुरुत्वपूर्ण जजमेंट देते आम देखा फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट कौन फाइंड करते इट वाज ऑब्जर्व बाय द कोर्ट दैट द ट्रिब्यूनल रिलियंस ऑन द उमादेवी जजमेंट वाज नॉट इनकरेक्ट as it was applied in the rigid manner without considering the subsequent clarification in state of Karnataka versus other ML Kesari and other. It is which held that the employee who have completed 10 years of service in sanction post prior to the pronouncement of the Umadevi judgment are entitled to regularization. It was observed by the court that the petitioner was continuous service करथिले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे एंड वाचर ड्राइवर एंड हिज सर्विस वाज ऑन पार विथ द रेगुलर एम्प्लॉई जो मान थिले तांको सहित समान। ही हैड बीन एंगेज इन सेड सर्विस राइट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज ए डेली वेजर। फर्दर द ट्रिब्यूनल हैड फेल्ड टू एवेलुएट द सब्स्टिट्यूशनल एविडेंस फर्निश्ड बाय द पिटिशनर इंक्लूडिंग हिज सैलरी रिकॉर्ड सर्विस सर्टिफिकेट व्हिच हैज एस्टैब्लिश्ड हिज कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड एम्प्लॉयमेंट। It was held that the absence of the formal appointment order should not in itself neglect the legitimate right of an employee who had been continuously engaged in service. एटी आम देखा it was observed by the court that case it had erred in dismissing the claim solely on the ground of delay. It was held that the delay cannot be solely criterion of denying service benefit, particularly when an employee and been continuously engaged by the government सरकार ताकू कंटिन्यूअसली एंगेज करुए सरकारी काम रे द डिले इवन वाज एट्रिब्यूटेबल टू द रेस्पोंडेंट फेल्युअर टू द रेगुलर ऑफ हिज सर्विस रादर देन एनी इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर। इन केस ऑफ जागो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मध्य गोटे केस होता जो थे कि समान धरण केस उमादेवी केस जो थिला से क्षेत्र में केस होता ता सहित देखूँ जोटि ये कहते इलीगल इट वाज फर्दर हेल्ड दैट देयर इज अपॉइंटमेंट वेयर नॉट इलीगल बट पॉसिबल इरेगुलर एंड वेयर एम्प्लॉई हु हैड सर्व कंटिन्यूअसली परफॉर्म टैक्स रिक्वायर्ड ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड देन टेम्पोरारी एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर फॉर फेयर रेगुलारेशन। दैट देखा शेष में मानवर कोर्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण देयरफॉर इट वाज हेल्ड दैट कोर्ट दैट द रेस्पोंडेंट कैन नॉट डेनी ऑफ द रिलीफ टू द पिटिशनर। इट वाज फर्दर हेल्ड दैट द ऑर्डर पास बाय केएसईटी वाज unsustainable in law as case it had failed to appreciate the legal principle of governing regulation as laid down ML Kesari other versus जोटा प्रेसिडेंट होता भितर केस with the aforesaid observation the writ petition was allowed जोटा कि रिट पिटिशन को मानवर हाईकोर्ट अलाउ करते। तो यहाँ गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर थिला। जब खबर टी आपको भल लगे दयाकर निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे भूलिए। धन्यवाद।